Yeah, hi everyone. So, welcome again. Yes, so we'll start from now. So, last class we discussed web-based attack versus system-based attack, and we also discussed one of the web-based attack, which is very important. That is your phishing attack. Okay, so we'll start the phishing. We'll start from phishing only. Okay, so we'll just cover up whatever we just discussed in the last class. Okay, so let's come to that part, which is your phishing. Okay, so you see what is a phishing. Okay, so phishing is a type of attack which attempts to steal your sensitive information, like user login credentials and credit card informations. Okay, so you see here, so what is phishing? So phishing means what? The attacker sends some malicious link where the attacker pretends to be a legitimate user. Okay? Legitimate user means what? Authorized user. Okay, so I'm just writing down the step-by-step process of phishing. Okay? So what happens in phishing? See here, this is we are now discussing what phishing. So first process, what in the phishing, what happens in the phishing? Attacker sends some links to the victim. Victim means who suffers from any kind of attack, that is victim. So first is attacker sends some links to the victim, which seems like original, but actually not. But actually not. Okay. Second step, what happens in this? Once the user, once the victim, you can say, victim clicks on the link. Okay, what happens? Click on the link. All the user credentials, user's sensitive informations, right? User credentials will be what? Exposed to the attacker. Attacker can easily get the things, all the valuable informations. Okay, so that is what your phishing. Okay, so last class also I gave one example that let's say you have selected in a campus interview. Okay, that let's say you selected in a campus interview and you got a mail that congratulations, you have shortlisted in the what you have shortlisted in the program, campus interview program, and to proceed further we need some information or documents.
So kindly send me your Aadhaar card and all your bank details, everything. Okay, so that is what, that is a fake thing. Okay, so never trust on any kind of unverified sources. Okay, so unverified sources means which is not verified. Okay, let's say let's say you are getting a mail from Wipro, so you should check the email ID. Okay, so let's say the email ID is Wipro uh, Wipro uh, Wipro India wiproindia.co.in, something like that, or instead of Wipro it has mentioned Wipra, let's say, and it is your thinking that it is our mindset, whatever we have already experienced, we think that as that one. Okay, we think about that one. Okay, so we can never imagine that they can send any kind of fake emails. Okay, so maximum people always fell in the trap. Okay, so that is a kind of a trap, you can say. Okay, so always you verify from the trusted website or verified sources. Okay, so that is your phishing attack we discussed. Next attack will move to brute force attack. Okay, what is that? Brute force. So let me just erase it. Another attack, which is brute force. Okay, so those who are in the those who are watching, kindly mention in the live chat that understood. Yes, please do it first. Please write down in the chat box. So let's discuss what is brute force attack. Okay, see here, in brute force attack what happens, it is a type of attack which user, like not user, that attacker uses trial and error method. Okay, so this attack generates a large number of guesses and validates them to obtain actual data like user ID and password, personal or any kind of personal identification number. Okay, what happens, you see here, let's say you gave your phone to your friend. Okay, and you logged in your Gmail account. Okay, and you gave the phone to your friend. Okay, so your friend has already seen your email ID. Okay, just your friend needs to guess the password of that email ID. He doesn't know your password, right? So he can guess. Okay, so in the guessing method he applies what hit and trial, or you can say trial and error method. Okay, where the attacker will tries multiple attempts to log in. Okay, जैसे कि वो मतलब ऐसे ही वो सोचता रहेगा कि क्या हो सकता है पासवर्ड, जैसे कि उसका नाम है लेट से सिद्धार्थ. ओके, सो वो ऐसा गेस कर सकता है कि सिद्धार्थ है मतलब क्या है कि सिद्धार्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है या फिर उसका बर्थ ईयर हो सकता है. सो वो ऐसे ही ट्राई करता रहेगा. लेट से सिद्धार्थ का बर्थ ईयर है 2002, तो वो ऐसे ही लिखेगा कि सिद्धार्थ @2002.
या फिर सीधा कुछ भी ये उसके रिलेटेड, ओके, यू कैन ट्रायल दिस थिंग्स, ओके, उसके रिलेटेड चीज़ वो ट्राई करेगा. ओके, सो व्हाट हैपेंस इन द ब्रूट फोर्स मेथड? सो द फर्स्ट थिंग वी नो इन द ब्रूट फोर्स मेथड, it is what? Brute force attack, right? Brute force attack. So what happens in the brute force attack? First point, what? The attacker uses what? Which method? Attacker uses trial and error method, right? Trial and error method, okay, to guess the what? Guess the user ID. User ID already that attacker knows what is the user ID. Only he needs to guess the what? Password. Okay. Guess the password. Okay, this is the first point. Okay. First thing is the attacker guess the what? The user ID, the password. Okay. See, he uses what? Brute force method. So second is what? He tries multiple times. Tries what? Multiple attempts, you can say multiple attempts. Okay, it tries multiple attempts for this. Okay, so that is what? Your brute force attack. Okay, so these are the steps you should remember. What do you mean by brute force attack? What do you mean by phishing attack? You should know the definition and the characteristics. Then you can guess which kind of attack is it. Okay, so in phishing attack, the user gets the victim gets some suspicious link. Okay, and once that victim click on that link, all the user credentials will be exposed. But in case of brute force attack, what happens? In this attacks, what the user uses multiple he tries multiple attempts. Okay, he guesses the password. Okay, try to attempt, let's say 98 the password, maybe like the birth year 2002 or 900 something like that, 901. So anything it can be it can be his nickname. Let's say Siddharth, so maybe it may be Sidhu. Okay, whatever. So this particular thing is called as what? Social engineering. So social engineering means what? It is also one of kind of attack. Okay, but we can call it as a passive attack. Why? Because indirectly it happens. How? So I'm just explaining to that. Okay, so in the third step, what? This attack may be used by the criminals to crack encrypted data, or by security or analysts to test an organization's network security, whatever. Okay, so in this, what? Criminals, or you can say attackers. Okay, criminals, what? Criminals crack the encrypted data. So last class I also explained encryption, decryption, right? Encrypted data. Criminals crack the encrypted data, or by security, okay, or you can say they can break the security forcefully. Okay, so can you imagine the definition for by this name? The name is brute force attack. You can imagine what may be the definition by the name itself.
brute force attack. Brute force means forcefully someone is doing something, right? Forcefully means the criminal is trying to get the access forcefully. Forcefully means he doesn't know about the password, but multiple times he's trying to get the password. Maybe this, maybe that, maybe that. He's just guessing of the password and he tries multiple times, or tries for multiple attempts. So that is what? That is brute force attack, right? So next I would explain denial of service. So have you guys understood this thing? Okay, just give a thumbs up or mention in the chat that understood brute force attack. Yes, please mention. Vivek, Pragya, Sneha, I guess you guys are watching, so please mention in the chat box. Yeah. Okay, great. So let's proceed further. Okay, so next attack we'll discuss, that is denial of service. Okay, so let's discuss denial of service. So if you guys are watching all these videos, so please make a note of it. Okay, so that should be there in your copy. Okay, so in the last of the session I'll be conducting one assessment test, okay, where you have to give one kind of exam, okay, for the certification, right? Let's do it. So that is your denial of service. So let's mention here denial of service. Okay, so let's see whether denial of service is there or not. It's a major thing. Let me mention here what is denial of service. Okay, so it is a attack which mean to make a server or network resources unavailable to the user. Okay, so it accomplishes by this flooding the target with traffic or sending it information that triggers a crash. Okay, so it uses the single system and single internet connection to crack a server. So it can be classified into two types, maybe three types. One is a volume based attack, protocol based attack, and another one application layer attacks. Okay, let's not go to that part deeper way. Let's come to the basic definition. What do you mean by denial of service? So by just hearing the term denial of service, so what comes to our mind? What do you mean by denial of service? So denial of service means what? Like something like someone is denying of something, like you are not allowed to do this, you are not allowed to do that. So we can guess that denial of service means like somebody is denying. Okay, I'm not allowing to enter to my class. Okay, I'm not allowing to do this thing, that thing. So that's the thing. Okay, you can just analyze the term denial of service. Okay, so denial of service means what? It is a kind of attack where attacker, I'm just writing one by one, step by step, right? Okay, here attacker, what? Here attacker sends multiple traffics to a targeted server. Okay,
targeted server, which makes the resources, or you can say information, okay, or you can say data, okay, unavailable. So this is what denial of service. So denial of service में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ. सो डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है, अटैकर मल्टीपल ट्रैफिक जो होता है ना, आप लेट से कोई भी एक वेबसाइट में जाते हो, कभी कभार आप देखे होंगे, आप एक चीज़ में क्लिक कर रहे हो तो वो आपको दूसरा कोई जगह में आपको ले जा रहा है, रीडायरेक्ट कर दे रहा है, या फिर आप वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, फ्रीज हो जा रहा है. ओके, ऐसा नहीं कि आपका नेटवर्क स्लो है, ऐसा कुछ नहीं, पर वो ऑटोमेटिकली करवा दे रहा है. ओके, तो कभी कभार आप देखते हो कुछ टाइम के बाद जो सर्वर है वो क्रैश हो जाता है. ओके, तो ये कौन करवाता है, अटैकर करवाता है. ओके, तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो ट्रैफिक का एग्जांपल दिया कि ट्रैफिक जो जनरेट होता है. ओके, सो अटैकर क्या करता है कि ट्रैफिक जनरेट करता है और वो एक टारगेटेड सर्वर को वो ट्रैफिक भेजता है. अगर बार बार एक सर्वर को हम लोग ट्रैफिक जनरेट करके उसको ट्रैफिक सेंड करेंगे तो क्या होगा कि जो भी रिसोर्सेस होंगे वो अनअवेलेबल हो जाएगा, या फिर वो क्रैश, तो जो साइट है वो क्रैश हो जाएगा. ओके, अल्टीमेटली व्हाट विल बी हैपन, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो साइट होता है, साइट क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है. ओके, तो साइट क्रैश हो जाता है, और आप क्या बता सकते हो कि जो रिसोर्सेस होता है, resources will be unavailable. Okay, so this is your denial of service. तो बेसिकली क्या होता है कि यूज़र ने चाहा कि ये सर्वर को वो एक्सेस करेगा, वो चाहा कि ये सर्वर को एक्सेस करेगा, पर अटैकर ने क्या किया, बोले नहीं ये तू एक्सेस नहीं कर सकता. क्यों? वो अटैकर का माइंडसेट वो होता है कि वो किसी को परेशान करना रहता है, या फिर कोई उसका काम रहता है, वो उसको हासिल करना चाहेगा, राइट. सो दिस हैपेंस, लाइक अटैकर सेंड्स मल्टीपल ट्रैफिक्स टू द टारगेटेड सर्वर, which makes the resources or information or data what unavailable. Ultimately what happens, ultimately the site will be crashed, or the resources will be unavailable. This is denial of service. Okay, I guess all of you have understood this denial of service. So if you have understood this, just mention DOS in the chat box. Write down DOS, DOS. This is what denial of service. If you have understood, mention DOS in the chat box. DOS means what? Denial of service. This is the short form. Okay. Yeah, everyone, please, if you are attending this, please mention in the chat box DOS. Yeah, good, very good. Very good, Priyavrata, then Vivek, Omraj, Satyajit, OD Gamers. Great. Okay, so let's proceed further. What is the next attack? Okay, so the next attack will consider that is man in the middle attack. Okay, man in the middle attack. ये आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. ओके, this may be an interesting one for you. So you just know that, let me tell you that I will be uploading all these things after the class. Okay, by tonight you will be getting the PDF of today's lesson. Okay, or today's topic. I'll be uploading that by tonight. Okay, so let's discuss another one, which is man. Okay, man in the middle
अटैक। तो आप सोच रहे हो कि ये सर ने क्या लिख दिया, मैन इन द मिडल अटैक, ऐसा कोई अटैक होता है क्या? यस, ऐसा एक अटैक होता है, दिस इज रियल, ऑल दिस थिंग्स। सो शॉर्ट, इन शॉर्ट आई कैन राइट डाउन मैन इन द मिडल अटैक, MITM, शॉर्टली हम इसको बोलते हैं MITM, मैन इन द middle attack. Okay, so what is that MITM? So it is a type of attack that allows an attacker to intercepts, okay, the connection between client and server, which acts like a bridge between them. So due to that, attacker will be able to read, insert and modify the data in the intercepted connection. Okay, so let's discuss this server and client thing. Okay, so this is client, this is server, let's say. Okay, so this is a server and this is the client. Okay, so now you see, client means what? You are the client. Let's say you, I will mention here, you are the client and you want to access a server. Okay, so for that you have to send a request to server here. Okay, now client will send a request to server. Okay, now the server will accept the request. Okay, or you can say acknowledge this. Okay, this is called as acceptance or accept, or server sends a acknowledgement request to the client. Okay, now what will happen? Connection will be established. Here now happens connection establishment. Okay, मैं आपको और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि लेट से आप गेम खेलते हो, BGMI खेलते हो, राइट? ओके, तो जब BGMI खेलते हो तो आप क्या करते हो कि वो एक रिक्वेस्ट आप भेजते हो किसे? जो BGMI के सर्वर को। आपने क्या किया, वो उसमें क्लिक किया। किस में क्लिक किया? BGMI के एप्लीकेशन में आपने क्लिक किया। तो क्या हुआ कि एक रिक्वेस्ट गया किसे? BGMI के सर्वर को, दैट दिस यूजर wants to access your server. Now the server will send a acknowledgement request to the client. Yes, we read your request and we are accepted. The server will again send that acceptance thing to the client, and in this way one connection will be established between the server and the client. Okay, so after the connection established between the server and client, you can be able to access all these things. You can play the game, right? So that is what? That is the connection established. Now here happens the attack. अभी आप देखो, यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पे सर्वर है, यहाँ पे अटैकर है बीच में, राइट? नाउ हियर इज द अटैकर. ओके, सो अटैकर क्या करता है? मैं यहाँ पे क्लिक लेता हूँ. Now here is the attacker. मैंने जहाँ पे A लिखा है वो अटैकर है, राइट? तो अटैकर क्या करेगा? अभी अटैकर क्या करेगा कि ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है, कौन सा? दिस वन इज द कनेक्शन, राइट? कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट. अभी क्या करेगा ये जो अटैकर है, ये जो कनेक्शन हुआ उसको वो क्या करेगा? एक्सेस करेगा, कनेक्शन को एक्सेस कर लेगा यूजिंग सम काइंड ऑफ टूल्स एंड ऑल. वो बहुत सारे टूल्स अप्लाई करेगा और टूल्स अप्लाई करके क्या होगा कि वो सारा चीज़ एक्सेस कर लिया. अभी ठीक है, अभी एक्सेस हो गया. प्लीज एक्सेस हो जाने के बाद अभी क्या होगा कि अटैकर विल बी एबल टू रीड, इंसर्ट एंड मॉडिफाई. तो लेट्स से यहाँ पे आपने जो एक स्कोर बनाया था गेम का, अभी आप गेम खेल रहे हो तो गेम में आपने स्कोर बनाया लेट्स से 5000. लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट मी गिव एन एग्जांपल. You made a score in BGMI that your score is 5000. Okay, so now what will happen?
here the attacker will modify the score. Score is 5000. Now he will modify, let's say he will decrease the score as 500. Now it is a loss for you. Okay, वो आपका लॉस हो गया कि उसमें जो भी डाटा था वो चेंज हो गया. लेट्स से आपके यहाँ पे जो अकाउंट था, अकाउंट का नाम था लेट्स से क्रिश. ओके, अकाउंट का नाम था क्रिश. तो अभी उसने क्या किया कि जो क्रिश लिखा है उसको वो डिलीट कर दिया, राइट. उसको वो डिलीट कर दिया या फिर उसको मॉडिफाई कर दिया. ठीक है, तो अगर मॉडिफाई भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, कुछ भी, जितना भी, क्योंकि वो सब एक्सेस कर पाएगा. नाउ द अटैकर कैन एक्सेस एवरीथिंग, ही कैन रीड, ही कैन डू एवरीथिंग. तो वो क्या करेगा, सारा चीज़ मॉडिफाई कर देगा. ओके, तो अब चीज़ थोड़ा समझ में आया कि नहीं, मैं और एक बार समझा देता हूँ. यहाँ पे क्लाइंट है, सॉरी, लेट मी जस्ट select this one. Yeah, you see here, here is the client, it is the server. तो बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है, और ये जो कनेक्शन है इसको एक्सेस करता है कौन, अटैकर. जब अटैकर इसको कनेक्शन को एक्सेस कर लिया तो वो क्या कर सकता है अभी, ही कैन रीड, ही कैन डिलीट और modify the things. ओके, तो इसको, ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ईप्स. मतलब ये जो अटैकर, ये केस में जब मतलब एक रिसीवर, एक सेंडर और रिसीवर का डेटा कोई थर्ड पार्टी चुरा लेता है तो उसको बोलते हैं ईप्स ड्रॉपर. ये टर्म है मना, ये अटैकर को आप ईप्स ड्रॉपर भी बोल सकते हो, राइट. ईप्स ड्रॉपर. ओके, सो उसका क्या होगा, स्पेलिंग क्या होगा, EAVESDROPER. उसको ईप्स ड्रॉपर भी आप बोल सकते हो, राइट. ओके, सो आई गेस नाउ ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस अटैक. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, प्लीज मेंशन MITM in the chat boxes. Please do it quickly. If you have understood, please write down in the chat box what MITM. Yes, please do it everybody. And if anybody didn't understood that concept also, please mention I didn't understand that one. So accordingly I can explain it once again. Yeah, please. Okay, good. You have understood MITM. Smita, very good. Priyavata Omraz, OD Gamers, very good. Yep. You guys have understood this thing. Anyone who haven't understood this concept, MITM? Okay. So I guess all of you have understood. So thanks for your reply on chat. So let's quickly come to the next part or next attack, we can say. So this is MITM. Okay, next. So after MITM we have another one, session hijacking. Okay, next attack is session hijacking. Okay, so you just analyze this term, session hijacking. Now what comes to your mind, session hijacking? What do you mean by hijack? If do you know hijack, what is hijack? If you know this, please write down what is the meaning of hijack in the chat box. Hijack, आप लोग देखे होंगे मूवीज में, बहुत सारी चीज़ देखे होंगे, ये सारा चीज़ हाईजैक, हाईजैकिंग. क्या है हाईजैक, मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईजैक? Yeah, I'm asking to everyone.
Do you know what is the meaning of hijack? Okay, let me tell you hijack मतलब क्या है. सो हाईजैक मतलब क्या है, आप सुने हो ना, मतलब बस हाईजैक हो गया. ओके, आज ये बस हाईजैक हो गया है, कल टेकिंग कंट्रोल, वेरी गुड. कल वो प्लेन हाईजैक हो गया है, राइट. ऐसा होता है कि नहीं. सीन आप देखे होंगे. निर्जा एक मूवी देखो, निर्जा एक बॉलीवुड मूवी है जिसमें जो एक्ट्रेस है शायद सोनाक्षी सिन्हा है. नहीं, सोनाक्षी सिन्हा नहीं है, सॉरी, वो शायद अनिल कपूर की बेटी है, राइट. तो जिसमें उन्होंने वो बढ़िया सा कैरेक्टर प्ले किया है निर्जा का. और उसमें क्या होता है कि आपका वो जो प्लेन है उसको टेररिस्ट लोग क्या करते हैं कि हाईजैक कर लेते हैं प्लेन को, और वो सब जितने भी पैसेंजर्स होते हैं सबका वो क्या करते हैं कि उनको सेफली उनको बाहर निकाल देते हैं, राइट. तो बहुत सारा चीज़ है, राइट. तो हाईजैक मतलब क्या है, हाईजैक. सो टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग, टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग. ओके, तो अभी सेशन हाईजैक मतलब ये क्या है, ये यहाँ पे कैसे हम लोग किसको मतलब हाईजैक करेंगे. तो इसमें कोई कंप्यूटर को हैक कर लेंगे क्या, मतलब हाईजैक कर लेंगे, या फिर सिस्टम को हाईजैक कर देंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है. तो बेसिकली आपको पता होगा कि हम लोग जब कोई भी वेबसाइट में जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उसका एक सेशन रहता है. जैसे आप कोई एक प्लेटफॉर्म में कुछ देर तक आप वहाँ पे रह गए और कोई भी एक्टिविटी आप कुछ नहीं किए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सेशन टाइम आउट हो जाता है. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि वो एक सेशन होता है. हर एक जो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें एक सेशन रहता है. हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, नेटवर्किंग पार्ट में जाएंगे थोड़ा सा. फुल्ली नेटवर्किंग तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ये कोर्स तो साइबर सिक्योरिटी है, पर नेटवर्किंग थोड़ा जानना भी ज़रूरी है, इसलिए हम लोग थोड़ा नेटवर्किंग पार्ट भी कवर करेंगे. तो उसमें हम लोग उसमें एक OSI मॉडल पढ़ेंगे. ओके, तो OSI मॉडल में क्या है कि हम लोग सारा चीज़ पढ़ेंगे. ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे लेयर्स है, 7 लेयर्स हैं, राइट. OSI मॉडल हम लोग पढ़ेंगे. OSI में 7 लेयर्स है. तो जिस 7 लेयर में से एक सेशन लेयर भी होता है. तो सेशन लेयर रहता है. तो सेशन लेयर हम लोग बाद में जानेंगे, पर मैं आपको समझा दिया आसान भाषा में सेशन क्या होता है. कि कोई भी आप प्लेटफॉर्म वेबसाइट में जाओ तो उसका एक सेशन रहता है, पर्टिकुलर सेशन. तो सेशन के बाद वो ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाता है, राइट. सो इट इज़ अ सिक्योरिटी अटैक ऑन अ यूज़र सेशन over a protected network. Okay, so web applications create cookies to store the state of the to state and user sessions. Okay, so let's say you are using any kind of web application, so it must be having some cookies. अब देखिए कोई भी वेबसाइट में जाओगे तो उसका एक cookies रहता है, राइट, जिसमें वो सेशन का सारा चीज़ स्टेट और इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर रहता है. यूज़र सेशन का इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर रहता है, इधर कुकीज़ में, राइट. कुकीज़, ये जो खाने वाला कुकीज़ नहीं है, राइट. ये कुकीज़ क्या है कि एक सेशन और जो भी सेशन का और यूज़र का स्टेट और इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर करता है. तो वो क्या होता है कि वो कुकीज़ को ही चुरा लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं. कौन? अटैकर. ओके, so by stealing the cookies an attacker can have access to all the user data. तो अभी सोचो कि एक यूज़र है और ये यूज़र ने क्या किया, एक यूज़र है. तो यूज़र ने क्या किया, वो वेबसाइट में गया, विजिट किया. तो वेबसाइट में उसने विजिट किया, उसमें लेट्स से विजिट किया, उसमें लॉगिन किया, लॉगिन करके लेट्स से कुछ पेमेंट का चीज़ कुछ किया, पेमेंट इन्फॉर्मेशन लेट्स है. तो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, विजिट का इन्फॉर्मेशन है, लॉगिन का इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट का इन्फॉर्मेशन. तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हुआ? कुकीज़ में. ओके, सो द यूज़र stores all the information, let's say visit information, login information, any kind of payment information. So that information will be stored in the cookies. Now what happens? The attacker, now here is the attacker. Okay, now attacker will steal all the
we will steal the cookies session, okay, cookies of the session. Okay, then what happens? All the user data will be stolen. Okay, the user data will be exposed. Okay, so that is what session hijacking. अगर हम लोग सेशन को ही हाईजैक कर लेंगे, सेशन मतलब सेशन में कुकीज़ रहता है, कुकीज़ को हाईजैक कर लेगा तो यूज़र का सारा डेटा मिल जाएगा किसे, अटैकर। सो दैट इज व्हाट सेशन हाईजैकिंग। ओके, so I guess everyone understood this one, session hijacking. If you have understood, mention hijack in the chat box. Write down hijack. Let me see who are participating. Participation should be there. Okay, as we are communicating via YouTube, so it is very difficult to know whether you are listening to me or not. Okay, so if you have already listened, if you are listening to me, so please mention in the chat box hijack. This is the live chat box. Very good. Okay, hijack, hijack, hijack. Good. So I guess you have already hijacked this. You have already hijacked my session. That's a good thing for me. So that means you have already understood. Great. Vishnu Priya, thank you. Pragya, thank you. Bismita, great. Vivek, good. Sneha, good. Om Raj, very good. Okay. So that means you have understood. Let's come to the next portion. Okay. So we understood phishing, we understood brute force attack, also understood session hijacking, and one more. What is that? Man in the middle attack. So altogether we discussed 4 attacks. Okay, let's come to the another one, which is your another attack I will be discussing. One concept is also there, that is social engineering. It is also attack. It is also one of the key concept of ethical hacking, social engineering. So guys, do you know that as you are currently studying computer science, okay, it is a branch, it's a royal branch. So there is another branch in computer science, sub branch you can say. Okay, so if you have heard about some good universities like LPU, okay, and all, so there the students used to study in social engineering branch. So they are now studying in social engineering branch. There is a specific branch, social engineering, right? Let's say you are studying here in CSE, CSE AI, CSE AIML, data science, or let's say CSE cyber security, or CST, computer science and technology, something like that. So there is a branch which is called as what, social engineering. Okay, social engineering वो क्या करेंगे, बड़ा सा ब्रांच। सोशल इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या करेंगे, माइंड को स्टडी करेंगे। ओके, सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है कि it is a study of someone's psychology. Okay, and then by analyzing their thoughts or thinking process, or by analyzing them, the victims, the attacker take the benefits and use that in their attack. Okay, so let me give one example. Okay, so let me quickly choose 2 names randomly from this chart. Okay, randomly 2 नाम लेता हूँ चार्ट में से। एक है विवेक, another one is Priyavrata. Okay, so Vivek is one person, Priyavrata is one person. Okay, so now you see Priyavrata एक कॉलेज में पढ़ता है, XYZ, कॉलेज नेम इज XYZ. Okay, now Vivek admitted to that college and joined later. Okay, so Vivek is now a newcomer. Okay,
Vivek is a newcomer, and Priyavrata is a existing student. Okay, existing students. Okay, now what happens? You see, अभी विवेक क्या करेगा कि ट्राई करेगा कि प्रियव्रत कैसा है, उसको स्टडी करेगा, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करेगा. ओके, रिलेशनशिप. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? फ्रेंडशिप. इट्स नॉर्मल फ्रेंडशिप. ओके, एक फ्रेंडशिप उसके साथ बिल्ड किया. वाई? बिकॉज नाउ अभी जस्ट आप समझो क्या है कि विवेक प्रियव्रत के साथ एक फ्रेंडशिप बनाया और उसको स्टडी किया कि प्रियव्रत कैसा है. ओके, सो आफ्टर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विथ प्रियव्रत, नाउ विवेक comes to know that Priyavrata's favorite dish is ice cream. Let's say ice cream. Okay, प्रियव्रता का फेवरेट चीज़ क्या है? आइसक्रीम. फेवरेट. फिर पता चला कि प्रियव्रता का फेवरेट क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर. ओके, उसका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? MS धोनी. ओके, उसका फेवरेट क्रिकेटर है MS धोनी. सिमिलरली उसका फेवरेट टीचर कौन है? जैसे वो उसको मतलब वो पता किया कि फेवरेट टीचर कौन है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो उसने नोटिस किया. ठीक है, तो फिर क्या होगा कि कुछ दिन के बाद लेट से प्रियव्रता और विवेक के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फ्रेंडशिप हो गया. लेट से उसने कुछ उसको गिफ्ट दिया, कुछ किया, ऐसे वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गया. बॉन्डिंग के बाद क्या होगा? अभी उसको फ़ायदा उठाएगा विवेक. विवेक क्या करेगा? नाउ विवेक लेट से एक दिन क्या हुआ कि प्रियव्रता ने उसको अपना ATM कार्ड दे दिया. ATM कार्ड दे दिया, राइट, कि जाओ तुम ये मेरे ATM से 6,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लो. तो उसने 6,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया. तो फिर क्या होगा कि अभी विवेक को पासवर्ड याद है, तो अभी वो क्या कर सकता है? उसका पासवर्ड यूज़ कर सकता है. ओके, तो ये भी एक तरीका है कि वहाँ से जो प्रियव्रत मतलब विक्टिम है, वो अपने तरफ से सारा चीज़ दे दिया उसको, क्योंकि वो ट्रस्ट एक जनरेट कर दिया. तो यहाँ पे 3 चीज़ हमने देखा कि एक है आपका रिलेशनशिप उसने बिल्डअप किया, एक रिलेशनशिप. ओके, दूसरा चीज़ एक ट्रस्ट जनरेट हो गया. किसके बीच में? जो अटैकर और विक्टिम के बीच में एक रिलेशनशिप, ट्रस्ट जनरेट हो गया. तो जिसके वजह से अभी आइदर प्रियव्रता उसको अपने तरफ से यूज़र ID पासवर्ड दे देगा, या फिर अगर उसको ID तो पता ही होगा, क्योंकि जो पर पासवर्ड ही पता नहीं रहता, क्योंकि वो पासवर्ड हमारे दिमाग में रहता है, राइट. तो अभी वो क्या करेगा कि पासवर्ड को वो गेस करना स्टार्ट कर देगा कि पासवर्ड क्या हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका फेवरेट चीज़ें क्या हो. तो ज़रूर उसका पासवर्ड इन सारे फेवरेट चीज़ों में से ही होगा. ओके, लेट्स से वो दिन भर MS धोनी करता रहता है, राइट. सो उसका पासवर्ड कहीं ना कहीं MS धोनी से रिलेट करता होगा, राइट. मे बी लाइक धोनी 1 2 3, धोनी 1 2 3 4 5, समथिंग लाइक दैट. ओके, लेट्स से उसका निक नेम उसको पता है कि प्रियव्रता का निक नेम लेट्स से गुड्डू है. लेट्स से गुड्डू, एग्जाम्पल गुड्डू है, तो वो उसको क्या बोलेगा कि गुड्डू 1 2 3, या फिर गुड्डू @1 2 3 4 5, समथिंग लाइक दैट. ओके, या फिर उसको पता है कि गुड्डू इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं रखता है, क्योंकि उसका माइंड ऐसा है ही नहीं कि उसके ऊपर उस ट्रस्ट है कि हाँ ऐसा कोई होता नहीं है, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा भी रख सकता है. तो ये वो सारा चीज़ ट्राई करेगा और वो उसका जो टारगेट है उसको फुलफिल करेगा. तो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग ये है. ओके, सोशल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या चीज़ डिस्कस किए, विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन. ओके, तो सोशल इंजीनियरिंग का जो स्टेप्स है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. क्या हमने यहाँ से जाना कि क्या है सोशल इंजीनियरिंग. सो सोशल इंजीनियरिंग व्हाट हैपेंस. सी
attacker establishes a very good relationship with victim, okay, tries to read his mind, and then he uses those information to commit a attack. That is what social engineering. So I guess everybody understood this one. Social engineering क्या है? Social engineering में अटैकर एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है किस किस के बीच में, विक्टिम और खुद के बीच में, ओके, एक ट्रस्ट जनरेट करता है. और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया कि एस्टैब्लिशेस ए गुड रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट. ओके, एक ट्रस्ट जनरेट हो गया तो फिर वो क्या करेगा, उसका माइंड को रीड करेगा, सारा चीज़ कलेक्ट कर लिया और वो इन्फॉर्मेशन को वो लगाएगा अटैक करने के लिए. तो अटैकर क्या होगा कि लेट से वो अभी उसका कोई एक बैंक अकाउंट को एक्सेस करेगा, एटीएम कार्ड उसका आईडी पासवर्ड मिल सकता है, या फिर शॉपिंग कर लेगा, कोई भी वो यूज़र आईडी पासवर्ड ले लिया, कार्ड एटीएम कार्ड का पासवर्ड पिन पता होगा, या फिर कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग, या फिर उसके कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो लैपटॉप में वो ले जाएगा. ओके, दीज आर द थिंग्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, सोशल इंजीनियरिंग. इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज मेंशन अंडरस्टूड सोशल इंजीनियरिंग. Please mention in the chat box, everybody. Yeah, do it. Okay. Yeah, very good, very good, very good. So now we'll be discussing. So there are so many attacks are there. Okay, so if I just explain only the attacks, so you guys will be boring. Okay, you guys will be get boring. So I'll be explaining 2 to 3 attacks which are left. I will be discussing in the upcoming session. Okay, so you for now you just revise all these attacks. Okay, social engineering हो गया, MITM, okay, phishing, okay, then man in the middle attack. You just revise all these things. Okay, next we'll be discussing system based attack. Web based attacks is now over. It's completed now. Okay, we'll be coming to system based attack. Web based attacks is over now. Okay, so let's come to web based attack. System based attacks. Okay, great. So we will be discussing what is system based attack. So now what comes to your mind if you heard this term system based attack? So now these are the attacks which are intended to compromise the computer or computer network. Okay, like you guys might have heard this term virus, worm, right? And Trojan Horse, backdoors, bots. Okay, so these are the what system based attacks. Okay, so let me write down first. There is one term virus, second worm. आप लोग बोलते हो ना कि उसके सिस्टम में वायरस घुस गया, ओके, तो करप्ट हो गया सिस्टम. ओके,
लेट्स से ट्रोजन हॉर्स हो गया, बैकडोर्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो ये वो चीज़ें हैं सिस्टम बेस्ड, जिसके थ्रू आपका सिस्टम बेस्ड अटैक होता है। सो वन इज़ वायरस, सेकेंड इज़ वॉर्म, थर्ड इज़ ट्रोजन हॉर्स, व्हाट इज दैट, ट्रोजन हॉर्स, फोर्थ backdoors, backdoors, fifth one bots. Okay, so these are the things by which the attacker commits system based attacks. Okay, system based attacks. Okay, so we'll be covering these things in the next class. Okay, one by one we'll be discussing virus, worm, trojaners, and backdoors. Okay, so I'm happy that you guys are regularly watching our you are watching the videos, you are attending the live session. Okay, so now it's a request for all of you that it's our channel, so we will be covering so many things here. Let me announce one thing. As previously I also announced that we are going to conduct a Java class, right? So Java class will be there, okay, free. That just as per this Java cybersecurity class, Java class will be there. So it is also one free of cost course. Okay, so you can attend that one. Okay, so information will be shared in your group. Okay, and so please give comments in our section. Okay, so this is a live chat which you give the reply. So once the live session ends, you can visit that video, go to that video and give a comment in the chat box, in the comment section, and you can like and you can subscribe. Okay, so if possible you can also share. Okay, so so that more students can join our session. Okay, so thank you for attending today's class. So next class will be tomorrow. I'll be mentioning the time. Okay, thanks for attending today. Have a great day. Bye bye.